Good evening, everyone. Today we'll be starting with chapter number 8. Now, why I skipped chapter number 7? Because तुम्हारा chapter number 7 जो तुम लोग का है वो है planning. ठीक है, तो we have already studied about planning in business studies, and that is the reason I have skipped chapter number 7, and we will be starting with chapter number 8, and we'll be going through the concept of project. Okay, what is a project? So because you all know what is planning, so it will be easy for all of you to understand the meaning of project and why you need a project and what are the phases of a project and the classifications of project. ठीक है, तो what is a project? जो भी हम लोग प्लान करते हैं वो किसी ना किसी काम के लिए करते हैं. ठीक है, मतलब टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर और टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी और व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर स्कूल, your own school or any industry or any company, then you have to make a plan. ठीक है, and why are you making that plan? You're making that plan for your new project or for your existing project. मतलब जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसमें कुछ रेनोवेशन के लिए या कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए तुम प्लान करते हो. ठीक है, यू आर डूइंग दैट पेन एंड पेपर वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट. ठीक है, सो दैट is the meaning of a project. Now, project refers to the investment which have opportunities that reflect the scope of a great deal of profit. ठीक है, why are you planning? You are planning, you're doing the plans for your project. And why are you doing your plannings for the project? Because you have to earn, you want to earn that profit. ठीक है, तो प्रोजेक्ट के लिए भी प्लानिंग करना होता है. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग is how you plan and implement and execute a project. Developing a project always depends upon a group activity. Now, whether you are planning or whether you are organizing or whether you are doing any kind of any functions of management, all these things is done with a group effort. ठीक है, it is all a group activity. So project planning is how you plan and then you implement it and then you execute your plan. This is your project. So okay, the activities included into planning are aimed for profit. Any activity which is included in planning, anything which you are planning is only for earning the profit. ठीक है, basically for earning the profit. Now, project planning refers to the amount of investment required for starting a new project and the possible एंड द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इट. प्रोजेक्ट का प्लानिंग, जो भी तुम्हारा जो नया काम है उसका प्लानिंग भी तुम लोग इसलिए हम लोग करते हैं ताकि वी कैन फ्रेम अ बेसिक आइडिया of the profit we are going to earn, we will be going to earn in future. ठीक है, and it is important to evaluate that thing. It is important to evaluate, मतलब it is very important to calculate the profit, to calculate the amount you need for your project. So it is very important to come to the बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस जो कि आ सकता है आगे चल के, वो जानना ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में. वाई इट इज़ नीडेड. ठीक है, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग. वन इज़ फॉर अ न्यू वेंचर एंड द अदर वन इज़ फॉर द एग्जिस्टिंग वेंचर. ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और एक जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी बनाते हैं. नाउ वाई इट इज़ नीडेड, वाई इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? बिकॉज it gives you the idea of the resources required, and then it also तुम एक अंदाज़ा लगा लेते हो कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान कर रहे हो उसमें उसमें क्या पोजीशन हो सकता है उस प्रोजेक्ट का. जो तुम प्लान कर रहे हो उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे हो सकता है. ठीक है, नाउ it also helps in planning and it helps in execution and it helps in monitoring the project. The project planning is important because it portray. So project planning helps in planning, it helps in execution and it also helps in the monitoring of the project. ठीक है, so as we have already studied about feasibility study क्या होता है. ठीक है, एक feasible study करना वो भी important होता है for your plan. So when the project start working, the actual result could be compared with the planned targets and standard to monitor the progress of the project.
ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इसलिए भी किया जाता है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द प्रोजेक्ट प्लानिंग बिकॉज इट मॉनिटर्स योर plan whether you are going according to the plan or not. It can be cleared with the help of a project planning, and it is easy to execute the plan because you have already planned the project कि तुमको कैसे करके अपने काम को करना है, तुम क्या प्लान किए हो उसको कैसे execute करोगे. All these things are very all these things becomes very easy with the help of project planning. ठीक है. Now our next topic will be classification of projects. ठीक है, मतलब projects कितने तरह का होता है. सो देयर आर बेसिकली 4 important टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स है, अदर प्रोजेक्ट्स जो अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स है. ओके, सो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स, और उसके बाद जो 5th पॉइंट है दैट दोज आर सम अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स. सो नंबर 1 इज द एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स. नाउ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स जो होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है. ठीक है, सपोज यू हैव ऑलरेडी प्लान योर प्रोजेक्ट and you have started working for that project, but you want to extend it. ठीक है, you want to extend your project, so for that reason you will use this extension projects. ठीक है, then these are the projects referred to extension or expansion are undertaken to facilitate sales and distribution, मतलब to elaborate sales and distribution. Now the second one is the expansion projects, the production of new items, establishment of new production units, increase in the production capacity, etc. are the projects which are incorporated in the planning of expansion. Now when your production exceeds and when your production expands, at that time you have to you have to add this expansion projects. The third one is the replacement projects, मतलब कि जो तुम्हारा ओल्ड जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो, अगर वो फेल हो जाता है या अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसको तुम किसी न्यू प्रोजेक्ट के साथ रिप्लेस कर दोगे. ठीक है. नंबर 4 होता है इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स. नाउ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जो होता है, these projects are new and automatic equipments are installed. The plans of modernizations are included. मतलब के improvement projects में improved techniques, new technologies use होता है. And the 5th one is the other miscellaneous projects, that is the education projects, welfare projects, health and sanitation projects, research and development projects. Okay, so these are the projects जो जैसे according to the situation यूज होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लेस किया जाता है. सो टुडे वी हैव covered 3 topics, that is the meaning of project planning, types of project planning, and why is project planning needed. This is we have studied chapter number 8 today, and I have skipped chapter number 7 because in business studies we have already studied about planning very briefly. ठीक है, so we'll be continuing with chapter number 8 only in the next video. That's all for today. Thank you.